Hello everyone and welcome back to Easy English with Manoj Mathur here, and today this lesson will help you understand one of the very important basic part of tenses, that is about present perfect tense. And you know that there are mainly three tenses and each tense has got four subsections. That means to talk about an action that which time it has or on which time it has happened or it's going to happen or it will happen. जो टाइम के बारे में बताने के लिए जो हम टेंसेस यूज कर रहे हैं, कोई ना कोई एक्शन कब होता है. सो हियर इस लेसन में आपको थोड़ा बहुत आइडिया आ जाएगा कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कब यूज करना है एंड प्रेजेंट परफेक्ट यूज करने का तरीका क्या है, उसका फॉर्मूला क्या है, एंड एवरीथिंग वी विल summarize in this small video lesson. So hope you will like this and you will understand something that is very basic for every English language learners and beginners. Okay, if you like this video, then please don't forget to like and please do subscribe to the channel to get more free English lessons, and please do share with your friends also. So let's begin the lesson by understanding the basics of the formula how present perfect tense is formed. Present perfect tense is formed by, as you know, that subject, then after there should be has or have, the third form of the verb followed by object. So this is something every language learner has to understand. Subject is the doer, means the person. Subject means जो person होता है, जो काम करने वाला. उसके बाद जो हेल्पिंग वर्ब होता है, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है या थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो हैज यूज करेगा, एंड आई फर्स्ट पर्सन के साथ हैव होगा, एंड प्लूरल सब्जेक्ट के साथ भी हैव रहेगा. एंड उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, दैट इज पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब, दैट इज कॉल्ड V3 फॉर्म. उसके बाद जरूरी नहीं है ऑब्जेक्ट लगाना, बट दिस इज द स्ट्रक्चर. वर्ब 3 के बाद ऑब्जेक्ट रहेगा. ठीक है, तो ये जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस नॉर्मली इसलिए यूज किया जाता है कि कोई ना कोई एक एक्शन प्रेजेंट मोमेंट में कंप्लीट हो गया हो. ठीक है, एन एक्शन दैट विच इज ऑलरेडी डन इन द प्रेजेंट टाइम. प्रेजेंट टाइम ड्यूरेशन में कोई ना कोई एक एक्शन आपने खुद किया हो या कुछ ना कुछ एक्शन हो गया हो, उसके बेस्ट मेमोरी जो अभी भी जो स्पीकर के सामने है, स्पीकर की माइंड में है, स्पीकर के दिल में है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस नॉर्मली यूज किया जाता है. ठीक है, एक्शन तो हो चुका है, बट फिर भी जो एक्शन को एक स्पेशल प्लेस, एक स्पेशल मेमोरी जो बोलने वाला की माइंड में है, तो माइंड में ऐसे एक स्पेशल मेमोरी हो, तो जो एक्शन हो चुका है तो उसकी सिचुएशन में, वो जो सिचुएशन के रिलेटेड हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करता है. ठीक है, सो वन एग्जाम्पल जो हम नॉर्मली यूज कर रहे हैं. ठीक है, आई हैव V3, I have attended the meeting, I have attended the party, I have enjoyed the party, I have attended the online class, I have watched the new English movie, she has visited her grandfather, she has visited the park, she has visited me, he has visited me, he has gone to the market. Okay, so ये सब चीज जो एक्शन हो चुका है उसके बारे में रेफर करने के लिए यूज करता है, एंड एट द सेम टाइम इट्स ऑल्सो हैज सम वेरी स्पेशल मेमोरी और रिमेम्बरेंस इन द माइंड ऑफ स्पीकर. सो हियर लेट्स सी सम एग्जांपल्स हाउ present perfect tense can be formed in different ways. First example we can see, I have visited. So here I के साथ have आएगा, I have visited. Okay, तो आपने क्या विजिट किया, ये तो वर्ब विजिट की पास्ट फॉर्म है, V3 फॉर्म है, visited. ओके, तो आपने क्या विजिट किया, मैंने क्या विजिट किया है, I have visited. तो जो मैंने विजिट किया है उसको रेफर करना है, उसके बारे में मेंशन करना है, तो वो ऑब्जेक्ट होता है. ठीक है, इधर एक एग्जाम्पल लिख लेते, I have visited the Taj Mahal. I have visited the Taj Mahal. ठीक है, you know Taj Mahal is one of the very famous building monument of our country and it's very famous, world famous. Okay, तो I have visited, मैंने क्या विजिट किया, the Taj Mahal. The actually particular definite article है क्योंकि this is something a kind of very proper noun. The Taj Mahal, one of a kind, one something that is very superior.
सो इसलिए द यूज़ किया है, द ताजमहल। ठीक है, तो मैंने विजिट किया था ताजमहल, वो बहुत साल पहले या 1 साल पहले, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट मैं जब बोलूँगा तो वो जो एक्शन हो चुका था उसके रिलेटेड कुछ भी मेमोरी स्टिल अभी भी माइंड में है, तो इस तरीके से लिख सकता है। आई हैव विजिटेड द ताजमहल लास्ट ईयर, पिछले साल में मैंने ताजमहल विजिट किया था। तो उसके बारे में बताने के लिए हम अभी एक सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट में यूज कर सकता है। ठीक है, आई हैव विजिटेड द ताजमहल लास्ट ईयर। ओके, सो प्लीज let me also know your idea that how can you make sentences using this sentence I have visited। जो आपने क्या विजिट किया है लास्ट ईयर, जो आप नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हो, so that it will be more easy and fun for you to learn and understand English grammar। Okay, so let's see one more example। she के साथ यूज किया जाता है has। she has enjoyed, गर्ल है she, उसने एंजॉय किया, she has enjoyed। क्या एंजॉय किया है उसके बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन देना है तो ऑब्जेक्ट लिखना होता है। तो एंजॉयड, क्या एंजॉय किया है, she has enjoyed द पार्टी। कोई भी पार्टी, बर्थडे पार्टी और मैरिज पार्टी, जो भी है, आपको डिटेल में इंफॉर्मेशन देना है तो दे सकते हो। ठीक है, एक एग्जाम्पल इधर लिखा रखा है आपके लिए कि she has enjoyed द पार्टी। she has enjoyed द पार्टी, वो अभी एंजॉय नहीं कर रही है, लेकिन जिसने वो एंजॉय किया है जो पार्टी में, वो एक स्पेशल मेमोरी है अभी भी। ठीक है, तो दैट्स कॉल्ड using of present perfect in English। Okay, so this is the basic structure and normally it is to denote an action that which is already happened। एक action already हो चुका है, but इसलिए यूज किया जाता है प्रेजेंट परफेक्ट में ताकि जो भी एक्शन हो चुका है उसके रिलेटेड थोड़ा बहुत मेमोरी याद जो अभी भी स्पीकर के माइंड में है। That's why we normally use present perfect tense। I hope you understood the very basic, very basic idea and understanding on how to use present perfect tense। Okay, so this is a structure, you can make your own sentences and please comment below whatever ideas come to your mind। And if you really like this today's video, then please don't forget to like and please share with your friends also। Thank you for watching my video, thank you for learning English with me। Have a nice time, take care।